देख रहे हैं चंदन कंप्यूटर एजुकेशन, जहाँ पे आप कंप्यूटर सीखते हैं, वो भी ऑनलाइन। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज ये एक नया वीडियो सीरीज शुरू हो रहा है, जहाँ पे आप HTML को बहुत ही अच्छी तरीके से सीखोगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है जो HTML को शुरू से देख रहे हैं या शुरू से सीखना चाहते हैं। ये उन सभी बिगनर्स के लिए ये वीडियो का सीरीज है। इसको हम और भी कई सारे वीडियो के पार्ट्स में लाएंगे, तो इसे हम लोग एक बेसिक इंट्रोडक्शन के थ्रू हम जान रहे हैं कि ये कैसे काम करता है। एकदम इसके बेसिक ABC से शुरू करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस YouTube चैनल को, और साइड में दिया गया वो बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, तो देखते हैं क्या है आज। HTML कहने से पहले हमारे दिमाग में आता है कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। तो HTML का फुल फॉर्म है Hypertext Markup Language. Is the code that is used to structure a web page, and it's contained. For example, content would be structured within a set of programs, a list of bullet points, or using images and data tables. As the title suggests, this article will give you a basic understanding of HTML and its functions. So, what is HTML? HTML is not a programming language. It is a markup language that defines the structure of your content. HTML consists of a series of elements which you use to enclose or wrap different parts of the content to make it appear a certain way or act a certain way. The enclosing tags can make a word or image hyperlink to somewhere else, can italicize words, can make the font bigger or smaller, and so on. For example, take this example. My cat is very gloomy. If we wanted the line to stand by itself, we could specify that it is a paragraph by enclosing it in paragraph tags. इस लाइन को हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, मीन्स इस लाइन को हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड में अच्छी तरीके से समझेंगे। तो इस लाइन में हम लोग देख रहे थे कि अपने उस प्रीवियस स्लाइड में देख रहे थे कि इसका अच्छी तरीके से हम लोग इसका लेबलिंग कर चुके हैं, और इसमें हम लोग अब कोई कंफ्यूजन ना रहे, तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि ये है ओपनिंग टैग। इसे कहते हैं ओपनिंग टैग और इसे कहते हैं क्लोजिंग टैग। बेसिकली इसी में आप मोस्ट प्रोबेबली जो बिगिनर्स है वो यहीं पे गड़बड़ करते हैं और यहाँ पे आके बहुत सारे मिस्टेक्स कर जाते हैं। जैसे कि ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग में बेसिकली एक डिफरेंस के थ्रू वो जान नहीं पाते हैं, और कहीं कहीं जगह पे इसके ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग कहीं कहीं छोड़ जाते हैं, जिससे कि उसके जो आउटपुट है सही से नहीं मिल पाते।
यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस है कि ओपनिंग टैग में सिंपली यहाँ पे पी समझाता है कि पैराग्राफ, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिलेगा क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग यहाँ पे एक स्लैश मिलेगा कि यहाँ पे जो आप कंटेंट लिख रहे हो, जैसे कि मेरे यहाँ पे लिखा है कि माई कैट इज वेरी ग्रूमी, तो यहाँ पे ये शुरू होगा और यहाँ पे आके खत्म होता है। ये एक पैराग्राफ का एंड है। और यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी आप शुरू करते हो टैग, तो उसका जरूर आप उसका एंड भी जरूर लिखो, नहीं तो आपका पूरा जो प्रोग्राम है उसका आउटपुट ठीक से नहीं मिलेगा। और आपको ये देखिए कि ये जो ओपनिंग टैग से लेकर कंटेंट, उसके बाद क्लोजिंग टैग, इसे पूरा जो अगर आप सर्कल को देखते हैं तो इसे पूरी लाइन को अगर हम लोग कहेंगे तो इसे कहते हैं एलिमेंट, ठीक है। इस चीज को हम अपने इस पूरे कंटेंट में, इस पूरे लाइन में हम लोगों ने इसी को ही डिस्कस किया है। तो हम लोग इसे और अच्छी तरीके से देखने के लिए अपने नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि इसको और अच्छी तरीके से हम समझेंगे। Elements can also have attributes that look like the following. Attributes contain extra information about the element that you don't want to appear in the actual content. Here, class is the attribute name and editor note is the attribute value. The class attribute allows you to give the element a non-unique identifier that you can be used to target it and any other elements with the same class value, with style information and other things. An attribute should always have the following: a space between it and the element name or the previous attribute. If the element already has one or more attributes, the attribute name followed by an equal sign, the attribute value wrapped by opening and closing quotation marks. Note: simple attribute values that don't contain white space or any of these characters can remain unquoted, but it is recommended that you quote all attribute values as it makes the code more consistent and understandable. Nesting elements. You can put elements inside other elements too. This is called nesting. If we wanted to state that our cat is very groomy, we would wrap the word very in a strong element, which means that the word is to be strongly emphasized. You do, however, needed to make sure that
your elements are probably nested. In the example above, we opened the P element, means paragraph first, then the strong element. Therefore, we have to close the strong element first, then the paragraph element. The following is incorrect. The elements have to open and close correctly. Have to open and close correctly so that they are clearly inside or outside one another. If they overlap as shown above, then your web browser will try to make the best guesses at what you were trying to say, which can lead to unexpected results. So don't do it. थैंक यू अगर इस वीडियो के एंड तक देखने के लिए, और अगर इस तरीके के वीडियोस और भी देखना चाहते हो तो आप जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, इस वीडियो की नेक्स्ट पार्ट में हम इसे आगे भी कंटिन्यू करेंगे, तो आप जरूर इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट को भी जरूर देखिए। तो अगर आपको इस वीडियो में अगर कुछ जानने को मिला हो और आप कुछ नया सीखे हो तो आप जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को, और शेयर करना मत भूलिए। तो टिल देन, बाय।